Assalamualaikum everyone. I hope you guys are doing well and welcome to another lesson. Today we will be going over graphs, and graphs are again super important in ATP or especially for A levels के भी paper 5 वाले. I will be doing session on that as well. उसमें भी ATPs are really graphs are really important. अच्छा, अब graphs में हमारे पास again we will revisit what we talked about on Saturday कि आपके पास दो तरह के variables होते हैं, independent variable, dependent variable. जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है दैट्स द वन दैट यू बेसिकली कंट्रोल इट, यू चेंज इट ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट. ठीक है, तो ये आपका हमेशा एक्स एक्सिस पे आएगा. और फिर हमारे पास होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल. डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो कि जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो ना तो इट चेंजेस ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट. वो आपके रिजल्ट्स हैं जिसको आप मेजर कर रहे हो, आप रिकॉर्ड कर रहे हो टेबल पे एंड ऑल ऑफ दैट. सो वो वाई एक्सिस पे आएगा. सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द एक्स एक्सिस, डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द वाई एक्सिस. लेट मी गिव एन एग्जांपल. I want to know, I want to know the volume of carbon dioxide when calcium carbonate breaks down. ठीक है, so अब ये मेरे कंट्रोल में है कि मैं कैल्शियम कार्बोनेट को किस टेम्परेचर पे हीट करता हूँ. सही. एंड देन आई वांट टू फिगर आउट कि वो कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है, या मेरे कंट्रोल में है कि कितना मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, या ये भी कि मैं किस उसको मैं अगर टाइम मेजर कर रहा हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन मेजर कर रहा हूँ, तो मैं टाइम फिर मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, मैथ्स में इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा. दैट इज ऑल इन माय कंट्रोल एंड दैट आई हैव टू डिटरमिन कि वो कितना होगा. सॉरी अबाउट दैट. या एंड जब एक आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लिया तो उसकी बेस पे यू विल ऑब्वियसली चेंज समथिंग एल्स. आपको रिजल्ट आएगा. सो अच्छा, मैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मेजर कर रहा हूँ, सो दैट विल बी माई डिपेंडेंट वेरिएबल. व्हाट अबाउट टेम्परेचर देन? What about the size of particle? What about if I'm reacting it with HCl in a reaction? तो वो सारे का सारा सिवाय एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट वेरिएबल के एवरीथिंग एल्स बिकम्स कंट्रोल वेरिएबल. वो चीज़ आप फिर फिक्स कर देते हो ताकि आपका रिएक्शन जो है वो आपको फेयर रिजल्ट्स दे. ठीक है, सो ग्राफ में हम इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट इनको शो करवाते हैं. अच्छा, दूसरी बात ग्राफ में जो होती है दैट इज अनॉमलस पॉइंट. अनॉमलस पॉइंट वो है कि आपका ट्रेंड है, उस ट्रेंड को वो शो नहीं कर रहा. यू ड्रो अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट. लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाने के लिए क्या तरीका है कि आपके पास नंबर ऑफ पॉइंट्स अबव एंड बिलो द लाइन शुड बी सेम. सेकेंडली द लाइन शुड शो अ ट्रेंड. अगर वैल्यूज राइज कर रही हैं तो लाइन ऊपर को जानी चाहिए. अच्छा, ग्राफ बनाने में एग्जामिनर आपसे दो तरह के ग्राफ मांगता है. समटाइम्स एग्जामिनर आस्क यू टू ड्रॉ अ कर्व, समटाइम्स दे आस्क यू टू ड्रॉ टू लाइंस. और उसमें वो यूज करते हैं एक टेक्निक दैट्स कॉल्ड एक्सट्रैपोलेशन. एक्सट्रैपोलेशन इज यू एक्सटेंड द लाइन. ठीक है, सो आपके पास पॉइंट्स हैं लेकिन उन पॉइंट से थोड़ा सा आप आगे को लाइन को एक्सटेंड करते हो सो दैट यू गेट अ लाइक अ ट्रेंड ऑफ वेयर द लाइन इज गोइंग. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस. वी विल पिक थिंग्स अप अलोंग द वे. ऑलराइट. अस्सलाम वालेकुम साफी. सॉरी आई गॉट रियली लेट टुडे. आई हैड अनदर क्लास, देन आई वेंट फॉर डिनर, सो इस वजह से आई होप यू डोंट माइंड सो मच. All right, let's look at this question. In the presence of a catalyst, hydrogen peroxide decomposes, ठीक है, into water and oxygen. Hydrogen peroxide के बारे में हमें ये पता है कि it's an oxidizing agent. So ये आपको पता है कि this is an oxidizing agent और ये oxygen release करता है. अच्छा जी. A student uses the apparatus shown to investigate the rate of decomposition. तो हम rate देखना चाह रहे हैं, time और obviously something else. एट टू डिफरेंट टेम्परेचर. सो हो सकता है कि यहाँ पे अब हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल टेम्परेचर हो जाए. ठीक है, और हम देखेंगे कितनी टाइम लगता है उसको कलेक्ट होने में. ऑलराइट, सो अब ये कलेक्शन ओवर वाटर है. ठीक है, कलेक्शन ओवर वाटर. व्हाई डज दिस वर्क? दो रीजन है. नंबर वन, वी नो दैट द गैस कमिंग आउट इज नॉट कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर. अगर वो सॉल्युबल होती तो वो तो यहीं पे इट विल फिजल आउट एंड विल नॉट बी कलेक्टेड ओवर देयर. सो दैट्स वन. सेकेंड, हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर है, हमें पता है कि जो गैस कलेक्ट हो रही है वो इसकी वॉल्यूम से कम है. वी आर नॉट गेटिंग गैस दैट इज मोर देन दैट, अदरवाइज वो सारी यहाँ से स्केप कर जाएगी. ओके, सो दैट्स इट. व्हाट्स द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद इट? व्हेन यू कलेक्ट द गैस लाइक दिस, अगर वो गैस वाटर में सॉल्युबल होगी तो वो डिसॉल्व कर जाएगी. यू वोंट बी एबल टू गेट इट. नंबर टू, the sample of gas that you get will have some water vapor in it, so you will have to dry it out. और dry करने के लिए we use concentrated sulfuric acid. ठीक है, तो वो हम यहाँ पे यूज करेंगे अगर हमने इसे करना हो. ऑल गैसेज आर लो डेंसिटी दैन लिक्विड, राइट? सो यहाँ पे ये नहीं आप कह सकते कि हम इसको इसलिए कलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि लो डेंसिटी है.
तमाम गैसेस, कोई भी गैस होती है यहाँ पे, इवन सल्फर डाइऑक्साइड विच इज़ मच हैवियर देन ऑक्सीजन, वो भी यहाँ पे ऐसे ही कलेक्ट होगी, हाँ वो वाटर में डिजॉल्व हो जाएगी. ओके, लेट्स लुक एट दिस वन. अब ये कर क्या रहा है कि यहाँ पे इसके पास सॉलिड है और उस सॉलिड को उसने उससे मिक्स करना है, तो यहाँ पे उसके पास कोई स्ट्रिंग होगी और वो स्ट्रिंग को पुल करेगा और उसकी वजह से ही विल बी एबल टू मिक्स द सॉल्ट एंड दैट थिंग, सॉरी catalyst and hydrogen peroxide. The oxygen gas is collected in the measuring cylinder. What property of a gas allows it to be collected insoluble? It is insoluble in water and that's why we are now collecting it. Name an alternative piece of apparatus. We could use a gas syringe ताकि हम इस गैस को कलेक्ट कर लें instead of water. Give a test and observation. अब हमें पता है कि oxygen relights a glowing splint, लेकिन इसमें टेस्ट क्या है? It is pass it over a glowing splint. That's your test. And your what you call observation relights. ठीक है, तो इन दोनों में फर्क है. So yes, you are absolutely right कि pass it over a light splint, that's your test, and relights, that's your observation. अच्छा जी, ये हमारे पास points हैं. ठीक है, we have to plot them. I'll just copy this part here. अच्छा जी, अब पॉइंट मार्क कैसे करते हैं. फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो इज कि आपने जब भी मार्क करना है, शार्पन योर पेंसिल, और ये आप देख रहे हैं 4 छोटे बॉक्सेस, आपका पॉइंट इनके अंदर आना चाहिए, इसके बाहर नहीं आना चाहिए. और जब भी आपने मार्क करना है तो आपने मार्क उसको इस तरह से करना है कि या तो डॉट विद अ सर्कल अराउंड इट, ठीक है, या क्रॉस. ठीक है, इसके अलावा आपने थर्ड कोई तरीका नहीं यूज करना, डॉट विद अ सर्कल या फिर क्रॉस. ठीक है, सो लेट्स डू इट. हमारे पास क्या है, 0 0, so that is this point. 240, that is this point. I'll use a different color. 450, 4, and this one is 50, I guess, this one over here. ठीक है, 691, अच्छा ये बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया. 691 आई गेस हेयर. ठीक है, अच्छा जी, 897. अब लेट्स सपोज मुझे नज़र नहीं आ रहा सही तरह से, तो आई कैन ड्रॉ स्ट्रेट लाइन हेयर. ठीक है, और ये लाइन ऐसे जा रही है और 100 की लाइन ऐसे आ रही है, तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि अच्छा मेरा पॉइंट जो है ना वो यहाँ पे करके कहीं होना चाहिए. एंड देन आई कैन इरेज द लाइन्स ताकि मेरे पास पॉइंट क्लियर आ जाए. ठीक है, सो आई विल कीप ऑन डूइंग दिस. दिस इज एक्चुअली डिफिकल्ट टू लुक एट. आई शुड यूज अ डिफरेंट कलर. ओके, नेक्स्ट वन इज 1099. 1099, I guess this one. And next one is 1200, 1400. Okay, so ये मेरे पास points आ गए, and उसने कहा है draw a circle around the anomalous point. I personally think that when this goes like this point doesn't follow. So मैं इसको circle कर दूंगा. So ये मेरा anomalous point है. ठीक है, I think green color is better suited for this. So ये मैंने कर दिया. अच्छा, use the points to draw a curve of best fit. So curve of best fit means कि आपने इनको join करना है तमाम points को which are now included, not the anomalous point. So I guess there you go. हो गई. The student repeats the experiment at 50 degrees Celsius. All other variables are kept constant. So अब उसने temperature increase कर दिया. So now the reaction is going to be faster. अच्छा, y-axis की जो value है ना, ये तब change होगी when you change the moles. You're not changing the moles. You're just changing the temperature. So that means the highest value is still 100. It's just that it's going to happen faster. So I guess it will be something like this. Okay, so same y-axis value, same horizontal value eventually, but it does faster. The student repeats that draw a second curve, explain your answer. So we'll say that number of moles produced is still the same, moles is unchanged, so same volume produced.
but particles have higher kinetic energy, so faster rate of reaction, less time taken. तो मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया कि y के अंदर वैल्यू ऊपर क्यों नहीं जा रही है और x में क्यों वो जल्दी कर रहा है. We don't need to give a lot of reason about collision theory because this is ATP. ATP में हम theory के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करते हैं. But even if you give, that's not wrong. A student makes an aqueous solution of potassium nitrate. She reacts dilute nitric acid with an aqueous solution of salt. Name a salt that she could use. So I want to make potassium nitrate. Nitric acid will give me nitrate. I'm going to look for something that gives potassium. So I guess potassium hydroxide, potassium carbonate, potassium salt chain. And potassium carbonate is a good choice. So potassium carbonate. Okay, that's my answer. Hydroxide won't be considered salt. We say that that is alkali, or यहाँ पे उसने salt मांगा है, तो I will not write hydroxide or oxide. अच्छा जी. The student investigates the mass of potassium nitrate that dissolves. ठीक है. On the graph, on the grid, extend the graph to 0. अच्छा. अब यहाँ पे, if you see that the graph is not really going down to 0, don't force it. ज़बरदस्ती नहीं करें. Don't force it to 0, okay? So this is what you get. Using the graph, deduce the temperature with solubility is 180 grams. So 180 grams. That I think is this 160, 170, 180. So 180 grams is this value. So I'll just draw a line over here. Now exam में आपने इस तरह lines draw करनी है. So the examiner knows कि हाँ बच्चे ने graph को use किया है. ठीक है? So we get what? 82.5? No, 85, sorry. So I'm getting 85. That's my answer. Using the graph, deduce the mass of potassium nitrate dissolved in 100 cm cube of water at 90 degrees Celsius. So 90 degree, yeah. So I'll draw a straight line at 90. Actually, it's not at 90. थोड़ा सा left को होनी चाहिए. There you go. This is 90. And on the y-axis, this is gonna give me what, 190, I think. नहीं थोड़ा सा गलत हो गया. So I'm getting this 195, I guess. So 195. The mass of potassium nitrate that crystallizes when this is cooled from 90 to 20. अच्छा अब 20 पे देखते हैं कितना है. So 20 per the value is I think 32. Could be 32, I guess. Yep. So मैं इसको कह सकता हूँ कि this is 32.5 and 20, but 195 at 90. So 90 per 195 है और 20 per 32 है. So I'll just subtract the two. So 195 minus 32. That's giving me 3 and 16. So 163 grams. Basically, हो क्या रहा है? We had this much solid dissolved at 90 degrees Celsius. When we cooled it down, तो वो solid dissolved नहीं रहा. So it started to crystallize. Eventually at 20 degrees Celsius, 32 grams still dissolved, but the remaining is crystallized. So ये जितना इनका difference है, ये हमें crystal की form में मिल जाएगा. Okay. Ammonia is produced by the reaction between nitrogen and hydrogen in the presence of catalyst. ठीक है, nitrogen mixed with hydrogen, a sample of reaction mixture. By the way, do you guys remember the catalyst? किसी को याद है? Okay जी, ये graph आ गया. Plot the results on the grid and draw a smooth curve of best fit. So हम जरा draw करते हैं इसको. 0, 0, 5, 10. So I guess this one. 10, 18. 15, 15. ये बहुत अजीब value है because it was rising on one occasion and then suddenly it falls. So it doesn't make sense, honestly. Yes, you're right. Yahya and Safi. It is iron. 20 to 24. So I'm getting this value, I guess. And then 25. And then again 25. So basically क्या हो रहा है कि reaction complete हो गया.
we have to draw a smooth curve. I will ignore this point. So this is my anomalous point, and I'll just join the rest. थोड़ी सी दोबारा बना लेते हैं. Sorry. ठीक है. The student believes that one of the data point is anomalous. हमने कर लिया उसका circle. Use your graph to determine the correct percentage of ammonia corresponding to a point circle in A2. So correct क्या होगी? It will be के 15 पर मैं graph को extend करता हूँ, and I will see के correct percentage should be 22%. Okay, so that's the one that I get. नहीं, line of best fit नहीं है. This is a curve of best fit, not line of best fit. Okay, the student decides to repeat the experiment. Why is this a good idea? क्यों हम results को अगर repeat करें so we get better results? It all comes down to के error. आपके पास जो errors हैं वो कम हो जाते हैं. Okay, so that's why. So we can obviously get a better value and all that. Okay, so हम average ले सकते हैं. So we can say that he can take average, and that way he can get better value. Suggest why a catalyst is used to speed up the reaction, of course, और किस लिए? The reaction. The reaction between nitrogen and ammonia is reversible and reaches dynamic equilibrium. Use the graph to suggest when dynamic equilibrium is reached. Obviously, when it becomes horizontal first. So, according to my graph, वो 24 पे horizontal हो रहा है. So I will say 24 minutes. ठीक है? Of course, आपका graph थोड़ा सा different होगा. So we will have to see for that. ठीक है? 25 भी दे सकते हैं. That's obviously your choice. Okay. The point is कि आपके graph में demonstrate करना है आपने. You have to give a proof that, oh, I know this is the way student has used it. Examiner को अगर demonstrate नहीं करेंगे आप, जैसे ये मैंने lines बनाई हैं, तो examiner को क्या पता है कि आपने कहाँ से ये values ली हैं. So demonstrate it. Graph में show करें. उसने बार बार बोला use your graph, तो यही use your graph होता है. Okay. Let's look at this one. So what are you saying? Can we say accurate results only? That is very vague, honestly. I wouldn't say just accurate results. I will have to explain कि वो accurate हैं तो क्यों हैं. ठीक है? I will explain. I'm sorry, Atif, I don't understand. What do you mean? Are you saying कि dark mode नहीं करना? Because many students say कि वो रात को देखते हैं तो वो फिर bright light की वजह से तंग होते हैं. So that's why I changed to dark mode. I don't understand what you mean by Windows की scheme change कर लेकर. I don't understand that. Okay. अच्छा. A student attempts to determine the percentage of oxygen in the air using the apparatus shown. ठीक है. अब यहाँ पे air है. Obviously we know the percentage is 20%. At the start of the experiment, there is 90 cm cube of air. ठीक है. तो ये हमारे पास initially the initial volume is 90 cm cube. Obviously इसमें से 20% जो है वो oxygen है. The air is passed backwards and forwards. So कर क्या रहा है कि उसको heat कर रहा है copper को. इधर से oxygen आएगी, इधर से दोबारा plunge करेगा, and it keeps on going backwards and forward. Eventually all the oxygen is used up and only the nitrogen and the remaining gases are left over. Why is an excess copper used? So that all the oxygen is used up. Exactly, not air, all the oxygen. ठीक है? So that all oxygen reacts. ठीक है? Why is gas allowed to cool to room temperature before measuring the final volume? बहुत simple सी बात है. Gases expand when you heat them up. So जब आपने कोई भी record करना है data, आपका सारा डेटा एक ही टेम्परेचर पे होना चाहिए ना, सो दैट यू नो कि गैसेस इक्वली एक्सपैंड हुई हैं, सो दैट ऑल वैल्यूज आर फॉर सेम टेम्परेचर. ठीक है, सो दैट्स द रीजन. ही रिपीट्स द एक्सपेरिमेंट सेवरल टाइम्स. ठीक है, हमारे पास ये डेटा आ गया है.
90 and 71, 70 and 50. So यहाँ पर you can see that this is your independent variable. उसने multiple experiments किए हैं और ये dependent variable है. So हमारे पास multiple data है कि अच्छा इसमें 90 minus 71 जो है वो oxygen है, 70 minus 55 ये oxygen है, and so we get this. Plot the results on the grid and draw a line of best fit. ठीक है, results को मैं यहाँ पे copy कर लेता हूँ. Oh, चलो 90 and 71. So I will draw line here at 90 and इधर 71 पे line draw करनी है, तो I guess this is gonna be, ठीक है. तो ये मेरे पास पहला पॉइंट आ गया and eventually I'll draw the rest of the points. 70 55 70 55. अच्छा जी, so 70 and 55 is this one, I guess. Next one is 60 and 52. So 60 and 50. I guess this one. 50 and 39. 40 and 31. And lastly 20 and 16. Okay, थोड़ा सा वेरीड सा है लेकिन चलें. सही है. Extend the upper end of the line to the edge of the grid. So line बनानी है हमने. Okay, so I'm gonna try to draw a line of best fit. ठीक है, I have to extend it ताकि ये बिल्कुल edge से आगे जाए. So this is a pretty straightforward line. आप देख सकते हो कि 1, 2, 3 and 4 points are on the line. One point is above the line, one point is below the line. So that is ideal. You need to have the same number of lines above and below. Okay. Atif LUMS is actually good, but I'm not sure how it matches with IIT because LUMS is not entirely as engineering university. But yeah, we have our challenges in Pakistan. In Pakistan, it's like really good. ठीक है. No. You can't compare MIT to any institute in the world. Honestly, MIT is a totally different thing. ठीक है, मतलब वो लोग ही कुछ और हैं. I took a class there. Those people, they're just like a totally different kind of people. They live and breathe science. So उनकी dedication, उनकी expertise, उनकी जो ambition है, that is unparalleled. So yeah, massive respect for those people. So you can't really compare them. Sure, Harvard, MIT, Cambridge, you can compare them. Sure, they're all as good as it gets. Anyways, coming back to this. Social science के लिए it's good, but let's talk about that some other time. Draw a circle around the anomalous point. अच्छा, अगर हम anomalous point यहाँ पे देखें तो maybe ये वाला point anomalous होगा. So I'll just circle this out, which means कि now I can adjust my line again to include the remaining 5 points. ठीक है. Suggest a reason why the anomalous result occurs. So do you see कि उसके पास volume जो है वो ज़्यादा आ रही है, trend से ऊपर आ रही है. So that might be because he did not cool it good enough. उसने इंतज़ार नहीं किया, उसने जल्दी वे कर लिया. The gas was not was still at a higher temperature. It was more expanded और उसने उसकी value ले ली. So it should have given it more time ताकि वो वापस उसी temperature पे आती, and that's why we got it. So it is possible that he did not cool it enough. He didn't cool the gas completely. Gas enough. Okay. Yeah.
All right, use your graph to determine the final volume of gas if the student was to use 100 cm cube. So again, you have to use your graph, which means you have to you have to demonstrate how you use the graph. So I will draw a line here at 100. Okay. So at 100, the value I'm getting is what? I'm guessing it's 75. So no, not 75, 78, I guess. So मैं 78 लिख रहा हूँ. Use your answer to calculate the percentage of oxygen in the air. Okay. You must show your working. Use your what? Use your answer to determine. Okay. So if he had 100, then 78 was left over. So 100 minus 78, in this particular case, I'm getting 22%. Okay. So that's what I got. Ideally, I should be getting 79 here. Okay. Ye wala point, which will mean that I get 21%. So that's the ideal case. Of course, if you draw the line better, I'm sure ये होगा. Don't target a distinction. Honestly, don't target it. अगर आपको world distinction चाहिए, just try to understand the subject better than your peers and go a little beyond your syllabus. Honestly, बाकी it's all a lot of luck. I remember एक साल मेरे दो students की world distinction आई थी, एक की physics में, chemistry में. तो I know उसी batch में बहुत से और students थे who were at least equally smart, if not more. And मेहनत भी बराबर होती है. And of course, the students who got it, they thoroughly deserved it. And उन्होंने माशाल्लाह बहुत बहुत मेहनत की थी. But इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी किसी ने नहीं की थी. It's a lot of luck there. Okay, it's a lot of luck there. Okay. All right, coming back to this. आज बहुत distracted है हर बंदा. Okay. The reaction between aqueous lead nitrate and potassium iodide produces a precipitate of lead iodide. Okay, ठीक है. So ये solid बन रहा है हमारे पास. Okay, and we're getting this solid out from two solutions. This is a precipitation reaction. A student has two solutions. G is an aqueous solution of potassium iodide of unknown concentration. So ठीक है, unknown concentration of potassium iodide. H is 1 mole per dm of lead nitrate. The student determines the concentration of G, the unknown thing, by adding different volumes of H to 4 cm cube of G. So do you see कि ये उसने control variable कर लिया, उसने fix कर लिया उसको, ठीक है, of G in a test tube. In each case, she allows the precipitate to settle, then measures and records the height of the precipitate. Okay, that's smart. Alright, so ये हमारे पास आ गया है. This is the precipitate. Now, do you notice कि precipitate की value increase कर रही है, but then it becomes constant? Why is this becoming constant even though they're continuously adding more? Because all of the reactant has been used up. इससे ज़्यादा reaction हो नहीं सकता है. So it has reacted completely. Okay. So we will say that यहाँ पे reaction complete हो गया and now this thing is in excess. Okay. Is this also called a titrant? It depends. We are right now not measuring the volume of H that reacted. ठीक है, so हम titration कर नहीं रहे हैं. But if we were doing titration, we could call it a titer or a titrant. Yes. This is a lot of this is not a very accurate result because you're still getting volume of this and you're just adding it up. But it is a pretty straightforward reaction and I like this technique. It's very quick. Okay. The student uses a burette to measure the volume of G and H. Why does the student use a burette instead of a measuring cylinder? Because burette has a lower error. Burette is more precise. Okay, so the real word is precise, but in O levels there's not a lot of distinction. IGCSE में O levels में वो accurate और precise दोनों को ले सकते हैं. Accuracy and precision are technically different things, but right now it doesn't matter. So we can say that it is more precise or accurate than measuring cylinder. Why does the student stop at 12 cm cube and not carry out further of 14? Already it is constant. So 12 के आगे भी वही result आना था. He was not going to get any different results. So we can say that the height of this precipitate is constant. ठीक है. So it no longer changes. It is not changing at all. The results are the same. Any of those arguments will work. Plot the results. ठीक है, तो हमारे पास values क्या हैं? अच्छा, this is a little, यहाँ से करते हैं इसको.
Okay, so we have 2 and 7.5. So 2 and I guess 7.5 is here, and 4 and 14.5, I guess that is here, and 6 and 22, 8 and 26, 10 and 26, and 12 and 26. Okay, so you can see that it's becoming constant. Okay, they have not asked us to, they have, let's see, draw two intersecting straight lines. So how do you draw two intersecting straight lines? One line will be this trend, the one that is going straight. Okay, so 26 पे वो exact straight जा रहा होगा. So this line should be exactly at 26. Okay, so it's going straight like that, and I've extrapolated it a little bit. I've extended it a little bit. Similarly, on this side, I have these. So that's a straight line here. Okay, so yeah. So you can clearly see that these two lines meet at this point. इसका मतलब है कि this is the actual value where the reaction completed. So अगर मैं इसको देखूँ तो मेरे पास actual value is this one, which is 7 point something, 7.2 I guess. Height of press plate if 3.5 cm cube of H is added. So if 3.5 was added, then this is probably 3.5. So then H would be, so again I have to demonstrate that I've used the graph. So I'm getting 12.5. So 12.5. Okay. The volume of H that shows that should be added means that we are not adding any extra amount. So I think that is 7.2 or 7.3. Let's go 7.2 लिख देते हैं, या हो सकता है खाली 7 ही हो. ठीक है, मतलब yeah, it is pretty much 7.0. yeah, ठीक है. If the question does not specify to make a line of best fit, वो बताएगा आपको, वो either they'll ask you to draw the graph or line of best fit or two lines of best fit. ये तीन तरह का ग्राफ आता है आपके पास. So they will specify, but you have to exclude the anomalous point. Okay, उसको include करके नहीं line draw करनी. The minimum volume that reacts completely with 4 cm cube. Oh wait, this should be the answer to this. ठीक है. 20 millimeters और height मांग रहा है वो. 20 millimeters of height के लिए we will have 20 here. ठीक है. And that is going to be this one. So I'm guessing that is, if this is 5, so 5.5 हो गया, yeah, 5.6 हो गया, so 5.6 I think that's the one. Okay, use your answer to determine the equation. Calculate the concentration of potassium iodide. Okay, let's see. So volume of H that completely reacts with 7. What do I know about H? So H is 1 mole per dm cube lead nitrate. So it's 7 cm cube that completely reacts. Okay, so number of moles is concentration to volume. The concentration is 1, 7 over 1000. So I'm getting 0.007 moles of lead nitrate. Concentration of potassium iodide निकालना है हमने. One of this reacts with 2 of that. So इसका मतलब है that number of moles of Ki will be double of this. So 0.014 moles. And in what? In 4 cm cube. So volume was 4, number of moles is 0.014, concentration is unknown, times 4 over 1000. And that gives me my final answer, which is gonna be 1000 divided by 4. That is 3.5. Okay, so 3.5 moles per dm cube. That's the one. That's going to be my answer. Okay, so
Do you notice कि मैंने क्या किया है? मैंने सबसे पहले figure out किया what moles of this I have, then I use the mole ratio to figure out moles of this, and then I use concentration. ठीक है? So it was pretty straightforward. It will affect your grade. Of course, ATP is an important part of O levels or IGCSE, and I would suggest that you attempt these questions. This worksheet is pretty extensive, again around 40 pages. So इसमें there's enough question for everybody to master it. और बस एक दफ़ा आपने करनी है, 2-3 घंटे निकाल के इसको बैठ जाना. इसकी मार्क्सिंग भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा. मुझे बनानी पड़ेगी वैसे तो, लेकिन I will share it and you will obviously be able to get it. कोई ऐसी वजह नहीं, there's no reason कि if a student applies themselves and works on it तो वो आए ना उसे. डरना नहीं है भाई, हो जाएगा. Alright. Iron rusts when in contact with air and water to form a solution containing aqueous iron 3 ions. When an indicator is added to a solution containing this, it turns dark blue. Okay. A student investigates the effect of sodium chloride on the rate at which iron rusts. ठीक है. ये उसका process है. वो क्या कर रहा है कि 25 cm cube of water है, so I'm guessing they used burette for that. They used an indicator, start the stopwatch, stop it when the colors change. ठीक है, रिपीट इज 5 टाइम्स. 5 टाइम्स रिपीट करने से हमारा एरर जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा. ओके, सो माई इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज दिस, माई डिपेंडेंट वेरिएबल इज दिस. आई वुड सजेस्ट कि टेम्परेचर शुड बी माई कंट्रोल वेरिएबल बिकॉज this will affect the rate of reaction, right? Similarly, amount of water added, that should also be control variable because this will change the concentration. Okay, and concentration की वजह से आपके सारा rate of reaction affect होता है. All right. Okay, let's look at this question. इसको ग्राफ करेंगे, ठीक है. और which number experiment is repeated? So obviously the one that does not fit the graph will be repeated. अच्छा, ये वाला ग्राफ थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज इसमें उसने हमें स्केल बताया नहीं है. वी हैव टू कम अप विद द स्केल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज गोइंग टू बी एक्स एक्सिस, दिस इज गोइंग टू बी वाई एक्सिस. सेकंड, व्हाट इज योर रेंज ऑफ वैल्यूज? सो यू स्टार्टिंग एट 0, you're going up to 2. So your x axis should be divided in a way कि you start at 0 and you have to go up to 2 or 2.5 maximum. तो आपके पास ग्राफ इस तरह से आपने अरेंज करना है. सिमिलरली on the other side हमारे पास values 100 is the lowest, 1450 is the highest. So we will figure out कि अच्छा यहाँ पे कितने boxes हैं हमारे पास and we'll divide them in a suitable way. Okay, so it's important that whenever you're drawing it out तो you practice it out. ग्राफ पेपर लें, उस पर suitable scale बनाएं. Of course math सब पढ़ते हैं, so math में this is a major part of your syllabus कि drawing the graph, knowing the scale, cumulative frequency में या coordinate geometry में you use it all the time, right? So it's important कि आपको उसका पता हो. This question is, the teacher suggests that the student repeat one of the experiments. So obviously the one that does not fit the reading, that's the one that will be repeated again. Let's see कौन सा यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा. आई थिंक इन दोनों में से कोई एक होगा, क्योंकि देखें 1 पे 300 है तो 1.5 पे तो कम होना चाहिए ना इसको, तो ये वाला गलत है. दिस मस्ट बी रिपीटेड आई थिंक. सो वो इसको रिपीट करेगा. ऑलराइट, एंड व्हाई शुड बी रिपीटेड? बिकॉज इट डज नॉट फिट द पैटर्न, डज नॉट फिट द ट्रेंड, इट हैज़ अ वैल्यू दैट इज नॉट सूटेबल फॉर द लाइन ऑफ बेस्ट फिट एंड ऑल. तो यहाँ से हमें ग्राफ से पता लग जाएगा. सो काफ़ी सिमिलर क्वेश्चंस हैं एंड यू कैन क्लियरली सी दैट द ट्रेंड्स आर कि वो आपको वेरिएबल्स देता है, टेबल देता है. यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ. ग्राफ आपके पास 3 तरह का है. कर्व है, 1 लाइन, 2 लाइन्स, एंड देन यू इग्नोर द एनोमलस पॉइंट. फिर वो आपसे पूछता है कि अच्छा ये एनोमलस आपने क्यों इग्नोर किया. वो आपसे पूछता है कि ग्राफ के ऊपर ये वैल्यू मुझे पिक करके दो. यू हैव टू ड्रॉ लाइन्स टू शो हाउ दैट इज़ डन. और ग्राफ में यही है. इसके अलावा ग्राफ के क्वेश्चंस में कुछ बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस नहीं आते हैं. एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर राइट देयर कि अगर आपने एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन किया हुआ है, आपने मोल्स किया हुआ है, ग्राफ में वो उसको कंबाइन कर देगा. ऑलराइट, सो आई थिंक दैट्स गुड इनफ फॉर टुडे. I have to get up early in the morning, so I will take my leave. And yeah, I'll see you tomorrow. We will do salt analysis, which is the
fourth lesson in ATP series, and then we'll hopefully be done with the ATP. We'll move on to paper 1 after that. All right. Thank you so much. Acha, my favorite movie. Interesting. I don't really have one favorite movie as such. मतलब there are many movies that I like, but most recently movie जो मुझे बहुत पसंद आई है that I watched again, Saving Private Ryan. So yeah, it was brilliant, just brilliant. So अभी recently मैंने देखी थी. Alright, yeah, Catch Me If You Can is good. Ayan, just work on it, you'll be fine. अभी बहुत वक्त है. This year's changes for ATP मैंने कल आपको बताया था कि उसने एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि नोट्स आपको वो खुद देंगे सिलेबस के, ठीक है, और दैट्स गुड फॉर ATP बट नॉट सो मच, मतलब ओवरऑल उसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है क्योंकि आपको पेपर 2 के लिए या वैसे तो आपको वो चेंज करने ही पड़ने हैं, ठीक है. सो इस वजह से कोई बहुत ज़्यादा उसका फ़र्क नहीं है. उसके अलावा आई डोंट थिंक कि कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं ATP के लिए एटलीस्ट. आई कैन वेरीफाई, लेट्स सी, अभी देख लेते हैं चेंजेस टू द सिलेबस. सो फॉर ATP हाँ फ्लेम टेस्ट ऐड हुए हैं लेकिन वो ऑब्वियसली वहाँ पे दे दिया उसने. कूलिंग कर्व्स है, एक नया इंडिकेटर है थाइमोफ्थलीन, वो ज़ीरो वो कलरलेस एंड ब्लू होता है इंस्टेड ऑफ फिनोफ्थलीन विच वाज कलरलेस एंड पिंक. सो बेस में वो ब्लू है. उसके अलावा आई डोंट थिंक कि कोई बहुत ज़्यादा आई डोंट थिंक कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस आई हैं ATP में. इट्स प्रीटी मच द सेम. इट्स जस्ट के एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन वाला सेक्शन है आपके असेसमेंट के अंदर और नोट्स आपको गिवन होंगे. अच्छा, एक और चीज़ है कि अब आपको 6 मार्क का प्लानिंग का क्वेश्चन आएगा, तो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन वाला जो है ना वो 6 मार्क का आपको आएगा, ठीक है. और ATP के मार्क्स भी कम हो गए हैं, 60 के बजाय अब 40 हैं. तो इसका मतलब है कि नाउ द वेटेज ऑफ एवरी पॉइंट मैटर्स मोर. सो थोड़ा सा एक एडेड प्रेशर है, बट या आई थिंक इतना ज़्यादा कोई और फ़र्क नहीं है. ऑलराइट, सो आई विल सी यू गाइज टुमारो एंड अल्लाह हाफिज़.